Conditional statement and the converse. First condition, the statements which can be written in the if-then form are called the conditional statement. Means we write down the statements in if and then form. So start the statement with the f and end with the n. Means अगर ऐसा हुआ, अगर मगर, इस स्टेट में हम कंडीशन लिख रहे हैं तो दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. When we show some conditions. Example, the diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. This is a statement. The diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. The statements. Now we convert to the conditional statements. If the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. If the given quadrilateral is a rhombus, then the diagonals are perpendicular bisector each other. This is our conditional statement. Okay. Second, the part of the statements following if is called the antecedent. The part of the statements following if, it's called the antecedent. Means the statements if के बाद जो पार्ट आ रहा है और देन के पहले आ रहा है वो हमारा एंटीसीडेंट होगा. In these statements, the given quadrilateral is a rhombus. This is our antecedent. Okay. The part of the statements following then is called a consequence. और जो then के बाद पार्ट आ रहा है that is our consequent. I'll repeat the statement. The part of the statements following if is called the antecedent. कोई भी स्टेटमेंट में इफ़ के बाद जो पार्ट आ रहा है, हमारा इफ़ के बाद क्या आ रहा है, द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. दिस इज आवर एंटीसीडेंट. एंड द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग देन, कोई भी हमारे स्टेटमेंट का पार्ट है जो हमें देन के बाद आ रहा है, दैट इज आवर कॉन्सिक्वेंट. आई विल रिपीट आवर फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट. कोई भी स्टेटमेंट हम इफ़ और देन के फॉर्म में लिख रहे वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है. नाउ द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इफ, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ, देन इट इज अ antecedent, and the part of the statement following then it's called a consequent. Now we learn the converse statement. If the antecedent and consequent in a given condition statements are interchanged, the resulting statement is called the converse of the given statement. Now we know what is the antecedent and what is the consequent. The statements following if the antecedent and the statements following then is a consequent. इफ़ के बाद का एंटीसीडेंट एंड देन के बाद का कॉन्सिक्वेंट, अगर वो हम इंटरचेंज करेंगे, इफ़ वी इंटरचेंज एंटीसीडेंट इनटू कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इनटू एंटीसीडेंट, मीन्स जो देन के बाद है वो हम इफ़ के बाद लिखेंगे और जो इफ़ के बाद है वो देन के बाद लिखेंगे. वो जो स्टेटमेंट मिलेगा दैट इज़ आवर कन्वर्स स्टेटमेंट. ओके. नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल, द ओल्ड एग्जाम्पल. If the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. This is our conditional statements. The given quadrilateral is a rhombus. It is our antecedent. Its diagonals are perpendicular bisector of each other. It is our consequent. Now we interchange consequent into the antecedent. What is our consequent? Its diagonals are perpendicular bisector of each other. If the diagonals of quadrilaterals is perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus. Rhombus is our antecedent. Okay. This is our converse statement, and this is our conditional statement. The both we learn what is a conditional statement and what is a converse statement. In that basis we learn 1.3 exercise. Okay. So write down these statements. Then we will start 1.3.